Hello dear student, welcome back to my channel. In my last video we have discussed gametogenesis. In that we will learn about spermatogenesis. Today we will discuss second part of gametogenesis, that is oogenesis. oogenesis ये जो प्रोसेस है उसमें ओहम बनता है. As this oogenesis, it's a process of formation of haploid female gamete, that is egg or ovum, from the diploid germinal epithelia. In this process, there is involved both the step, that is the meiosis and the mitosis. But what is important? Oogenesis, it's markedly different from the spermatogenesis process. But in both these two gametogenesis process, that is the spermatogenesis and the oogenesis, the common step is here. Three steps is common. First one is a multiplication phase, second one is a growth phase, and the third one is a maturation phase. What happened in the first phase, that is a multiplication phase? We have to study by considering this diagram, this image. In this stage, the primary germinal cell, which is a diploid in nature, this primary germinal cell, it undergoes repeated mitotic division to form millions of gamete mother cell, and this gamete mother cell known as oogonial cell. This oogonial cell, its latter develop it into the ovum or egg. As this gamete mother cell or the formation of ovum, it is completed in the embryonic stage of the human female. These oogonia are formed in the ovary of female baby during the fertile life, that is before her birth. ये बच्ची पैदा होने से पहले ही जब ये फीमेल अपने मदर बॉडी के अंदर होती है, तभी से उस फोटस में ओवरीज के अंदर oogonia की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है. In the last video we have to already discuss, that is in ovaries there is a presence of 2 millions of the primordial follicles. These primordial follicles, it is embedded in the fertile ovary, and only 1 million remain at birth, and only about 40,000 to 16,000 remain at the time of puberty. Large number of the primary follicles are destructed. After the formation of this oogonia, it is increasing in the size. इसकी size बढ़ जाती है and undergoes the second phase, that is called as the growth phase. This oogonia, it is start entering it into the meiosis first of prophase first. When this oogonia, it is entered it into the meiosis first of prophase first, it get arrested for some period, for some time in the ओवरी. यहाँ पे क्या होता है, जब ये oogonia फॉर्म होता है, oogoनियम की डिवीजन हो रही है, मियोटिक डिवीजन हो रही है, प्रोफेस फर्स्ट में ये जब चला जाएगा तो oogonia टेम्पररी अरेस्टेड होगा. तो उस टाइम में oogonia को बोला जाता है प्राइमरी oocyte. कुछ टाइम तक oogoनियम की डिवीजन नहीं होने वाली है, ये डिवाइड नहीं होगा, ये प्रोफेस फर्स्ट में ही अरेस्टेड होगा. ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज oogonia. It is get arrested at the prophase first of meiosis first, and result is the formation of the primary oocytes. These primary oocytes, it's also the diploid in nature. The cellular organelles which is present in this primary oocyte, it is, that is endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria,
It is increasing in number. After the formation of these primary oocytes, the third phase is start, that is known as the maturation phase. The oogenesis takes place in the ovaries. ये इस ओवरी के अंदर होने वाली है पूरी प्रोसेस. The process is initiated prior to the birth of the female baby. These primary oocytes is here. You can see here this one is a primary oocyte. This primary oocyte enters the maturation phase. ये कौन सी phase में जाने वाला है? Maturation phase में जाने वाला है. And it included the meiotic division. That is, the meiosis first division is there. The diploid primary oocyte undergoes meiosis first division, that is says as the reduction division. इसको क्या कौन सी डिवीजन बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है. It is undergoes a reduction division and two forms the two haploid daughter cell. The division is peculiar in female as both the daughter cell are with haploid in number, means it contains 23 number of chromosomes and it contains the 23 number of chromosomes, but due to unequal division of cytoplasm, यहाँ पे जो division होने वाली है ये कैसी division होने वाली है? ये है unequal division of cytoplasm. So there is the formation of a one larger cell is here. There is a formation of one larger cell and another one is the smaller cell. This larger cell it called as the secondary oocytes, and the smaller cell it called as the first polar body. As this first polar body does not enters, in most of cases the first polar body it does not enters the meiosis second division, but the secondary oocyte which is here, which contains the haploid sets of chromosome, that is a 23 number of chromosome, it is proceed the second division, that is meiosis second. But when this secondary oocytes it is reaches up to metaphase second division, it's a division it's stop. The secondary oocyte is shed from the Graafian follicle. ये जो secondary oocyte stage का जो ओवम होता है ये Graafian follicle से निकल जाता है. ये Graafian follicle से निकल जाता है at the whenever there is increasing the level of the LH hormone. Due to increasing the level of the LH hormone, the Graafian follicle is burst and secondary oocyte stage of ovum it is released from the Graafian follicle, that is the ovulation it's occurred. The restart and the completion of meiosis second will happen only with entry of the sperm. ये जब secondary oocyte stage का जो ovum निकलता है ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा fallopian tube के अंदर जाने. It is reaches up to the ampulla region, and when the sperm it is reached up to the secondary oocyte stage ovum, then again there is a meiosis second division it's completed. Result is what? There is a formation of again the two cell. It's a larger cell and a smaller cell. This larger cell it called as the ovum and the smaller cell it called as the secondary polar body. Okay, यहाँ पे important बात क्या है आपको बता देती हूँ मैं. As in the oogonia, जो oogonia होता है oogonia डिवाइड हो रहा है ये meiotic फर्स्ट डिवीजन में जाएगा, लेकिन ये oogonia प्रोफेज फर्स्ट में जाएगा तो वहाँ पे वो टेम्पररी अरेस्ट होगा. मैंने पहले भी बोला है कुछ टाइम तक
ये डिवीजन नहीं होगी। लेकिन बाद में क्या होता है, दिस प्राइमरी oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell। जो प्राइमरी oocytes होता है उसके बाजू में, चारों बाजू में, चारों साइड में, for all the sides it is get surrounded by the granulosa cell and that is called as the primary follicles। उसको कौन सा follicles बोला जाता है, प्राइमरी follicles बोला जाता है। तो प्राइमरी oocyte से क्या बनता है, प्राइमरी oocyte से बनता है प्राइमरी follicles। दिस ग्रैन्युलोसा सेल का फंक्शन क्या बनता है फिर यहाँ पे, द ग्रैन्युलोसा सेल इट्स अराउंड द प्राइमरी oocyte। ये जो ग्रैन्युलोसा सेल है, ये ग्रैन्युलोसा सेल जो है वो प्राइमरी oocytes के बाजू में बन जाती है। और दिस ग्रैन्युलोसा सेल ये जो सेकेंड फंक्शन परफॉर्म करती है, ये है स्टेरॉइड का प्रोडक्शन करती है। मीन्स व्हाट, दिस अ प्राइमरी oocytes, ये जो प्राइमरी oocytes है उससे क्या बनता है, उससे बनता है प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल्स। As this primary follicles, it is a large in number, millions of number. As most of the primary follicles are degenerated, birth to puberty, पैदा होने से पहले ही और प्यूबर्टी के एज के टाइम में ही बहुत ज़्यादा नंबर के फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओनली द 40,000 to 60,000 फॉलिकल्स लेफ्ट इन द ओवरीज। दिस प्राइमरी फॉलिकल्स, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाता है, इट गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। इसके बाजू में और ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स का कवरिंग आ जाता है। रिजल्ट इज व्हाट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल्स। कौन सा फॉलिकल बनता है फिर यहाँ पे, ये बनता है सेकेंडरी फॉलिकल्स। दिस सेकेंडरी फॉलिकल्स इट फॉर्म्स द टर्शरी फॉलिकल्स, उससे बनता है टर्शरी फॉलिकल्स। टर्शरी फॉलिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें बन जाती है कैविटी। दैट कैविटी इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी और इसको बोला जाता है एंट्रम। As this tertiary follicle whenever it is formed, it forms the mature Graafian follicle। क्या बन जाता है फिर यहाँ पे, mature Graafian follicles बन जाता है। That is a primary follicles, it forms the secondary follicle, secondary follicle forms the tertiary follicle and tertiary follicle forms the Graafian follicle। As a Graafian follicle, मैंने पहले क्या बोला था, ये जो प्राइमरी oocyte जो बना था ऊगोनियम से, वो प्रोफेज फर्स्ट के मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में अटकी हुई है, ये यहाँ पे अरेस्ट हुई है। मीन्स ये जो फॉलिकल्स बने हैं इसके अंदर जो ओहम है ये कौन से स्टेज में है, ये है प्राइमरी oocyte के स्टेज में। ये आपको याद रखना है। ये जो यहाँ पे ओहम बना है ये कौन से स्टेज में, ये है प्राइमरी oocyte के स्टेज में है। As a Graafian follicle whenever it is formed from the tertiary follicles, the first meiotic division completed। ये फर्स्ट meiotic division complete होगी जब Graafian follicle बनेगा। तो फर्स्ट meiotic division जब complete होगी तो क्या बनेगा, it's a unequal division of cytoplasm। Result is a formation of the larger cell called as the secondary oocyte। यहाँ पे बनता है secondary oocyte। लेकिन टर्शरी फॉलिकल के टाइम तक यहाँ पे जो ओहम होता है वो कौन से स्टेज में होता है, ये होता है प्राइमरी oocyte के स्टेज में होता है। लेकिन जब टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो तब वहाँ पे जो डिवीजन होती है मियोसिस फर्स्ट जो कंप्लीट होती है तब बनता है ये सेकेंडरी oocyte स्टेज एंड ए स्मॉल टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडीज आर फॉर्म। एज अभी तक हमने क्या देखा है कि पहले था कौन सा था, प्राइमरी oocytes था। प्राइमरी oocytes में
क्या सराउंडेड हो गया, प्राइमरी oocytes को सराउंडेड हो गया सिंगल लेयर ऑफ द ग्रैन्युलोसा सेल। तो क्या बन गया है, यहाँ पे बन गया ये प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बन गया ये प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स को और ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स की कवरिंग आ जाती है। फिर क्या बन जाता है, फिर बन जाता है ये सेकेंडरी फॉलिकल्स। कौन सा फॉलिकल्स बन जाता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल्स से बन जाता है टर्शरी फॉलिकल्स। और टर्शरी फॉलिकल्स के टाइम में भी अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocytes होता है। और जब ये टर्शरी फॉलिकल्स डेवलप होता है ग्राफियन फॉलिकल्स में, तब जाके मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होती है और मिलते हैं यहाँ पे वन इज अ लार्जर सेल and another one it's a smaller cell. This larger cell it called as the secondary oocytes. On the smaller cell it called as the first polar body. As after the formation of the secondary oocyte, in most of the cases the first polar body it does not enter it into the meiosis second condition, but this secondary oocyte, ये जब secondary oocyte form होता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल से निकल जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुलर रीजन तक चला जाता है। और जब यहाँ पे स्पर्म आ जाता है, स्पर्म ये सेकेंडरी oocyte स्टेज का जो ओवम होता है उसको टच करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंप्लीट होता है meiosis second division. As is meiosis second division, whenever it is started, there is a formation of again the larger cell and the smaller cell. This larger cell it called as the ovum and the smaller cell it called as the secondary polar body. Okay, as in the oogenesis there is a three stages is your multiplication phase, growth phase and the maturation phase. This multiplication phase, in this stage the primary germinal cell it's a diploid in number of ovary undergoes repeated mitotic division to forms the million of gamete mother cell or the called as the oogoneous cell. This process completing the embryonic stage of the human female. Growth phase, only some of oogonia it is increasing in the size and forms the primary oocytes. This primary oocyte is also diploid in nature. Due to increasing in the size, there is increasing the number of the cellular organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex and the mitochondria. The third last important phase is there, that is the maturation phase. oogenesis takes place in ovaries. कहाँ पे होती है ये प्रोसेस, ओवरीज के अंदर होती है. The process initiated prior to the birth of the female baby. बच्ची पैदा होने के पहले से ही फीमेल मदर बॉडी के अंदर ये प्रोसेस पूरी तरह से चालू होती है. As the primary oocyte enters the maturation phase which include the meiotic division, that is a meiosis first and the meiosis second division. The diploid primary oocyte undergoes the meiosis first division, that is called as reduction division and the formation of the two haploid daughter cell. The division is very peculiar in female as both the daughter cell is having the haploid number of chromosome, that is a 23 number of chromosome is here. But due to the unequal division of cytoplasm, there is a formation of the two forms of cell, that is the larger cell and the smaller cell. The larger cell it called as the secondary oocyte stage, secondary oocytes, and the smaller cell it called as the first polar body. Normally the first polar body does not enter meiosis second division, but the secondary oocyte does not enter the meiosis second only up to metaphase second. The division for this stop. The secondary oocyte it shed from the Graafian follicle. ये Graafian follicle से बाहर निकलता है और it is restart and the completion of the meiosis second division. जो बाकी बची हुई जो divisions होती है एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, ये division ampular region में
कंप्लीट हो जाती है फैलोपियन ट्यूब्स के. It happens only with the entry of the sperm. The last phase usually completed in the ampular region of the fallopian tube at the time of fertilization. Fertilization के time ये बाकी की divisions complete होती है. As it is a division, also the two unequal daughter cells are formed. That is a larger cell it called as the ovum. Larger cell को बोला जाता है ovum और the smaller cell it called as the second polar body. The ovum so formed function as the female gamete and it's ready for fertilization. Okay, I think so you understand up to this. Thank you for watching my video. In my next video we will see the difference between the spermatogenesis and the oogenesis. Thank you.